हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम। सो आज मेरा ये फ्लोरिडा रोड ट्रिप का लास्ट डे है। एक्चुअली कल लास्ट डे है, पर कल पूरा डे ड्राइविंग में जाएगा क्योंकि मुझे अटलांटा से ड्राइव करना ऑल द वे टू न्यू जर्सी, जो कि ऑल द वे 12 आवर का ड्राइव है। इसलिए कल मैं फुल डे ड्राइव कर रहा हूँ टू न्यू। सो आज मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ कोका-कोला एंड जॉर्जिया एक्वेरियम। मैं आपको इस दोनों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आफ्टर रीचिंग देयर। मैं वहाँ पहुँच के दूंगा इन्फॉर्मेशन पूरा। तो अभी जस्ट हम लोग अटलांटा में इंटर करने वाले हैं। keep right on I-75. Thank you. अभी मैं आ चुका हूँ वर्ल्ड कोका-कोला के लॉबी में। दिस इज द लॉबी। यहाँ पे मैं नंबर दिया गया है, तो नंबर 6 पे खड़ा होने के देखते हैं कि पता नहीं है किस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता। वैसे Wonders. There you go, super fan Will. And before we get started today, there are 3 very important rules for you today. Rule number 1 is that we are practicing masking against social distancing, so keep those masks on over your nose and mouth at all times, including for pictures. You may remove your mask when today's the taste of day across every country except for 2. Right over here on this back wall where superfan Amy is, we have our mission statement. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open sesame. Yes, I have the magic powers. Isn't it? सो अभी लॉबी में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है उसके रिलेटेड, और उसको रूम वंडर्स कहा जाता है, जहाँ पे कोका-कोला से रिलेटेड सब वंडर्स रखा हुआ था। और अभी जिस रूम में हम हैं वहाँ पे कोका-कोला की हिस्ट्री से रिलेटेड सारे आर्टिफैक्ट्स है। सो अभी उन आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। This is a room of wonders. We like to call it that because inside we have over 200 different Coca-Cola artifacts spanning over 100 years of Coca-Cola business. But that's enough about me, enough about the room. I want to hear about you guys. Do I have anybody in the room visiting me today from the state of Georgia? Anybody from Georgia? Okay, we got one group. Guess what, you guys? Me too. Yes. Do I have anybody from outside the United States? Anybody from outside the United States? Anybody visiting from a different country? Going once, going twice? I guess not. So I guess that means everybody in this room, except for those people over there, are from a different state than Georgia. सो अभी हम हैं थिएटर में। सो यहाँ पे कोका-कोला के हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो दिखाया गया था, विच आर वेरी ब्यूटीफुल। बट कॉपीराइट इशू के कारण हम ये वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि यू कांट रिकॉर्ड दिस वीडियो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट से कोका-कोला का या अपना इनका कॉपीराइट है। दैट्स व्हाई वी कांट शो द वीडियो। सो मेरे पीछे जो वॉल दिख रहे हैं आप, यही कोका-कोला का सीक्रेट फार्मूला है। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। सो जो वॉल तक जाने का जो वे है, उस पूरे वे को वर्ल्ड कोका-कोला ने बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया अपनी हिस्ट्री से। सो ये कोका-कोला के इनिशियल डे का हिस्ट्री है। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स है, कुछ रिटन नोट्स है जिन कोका-कोला का इनिशियल डेज का। यस यस, आई एम लुकिंग फॉर।
It's not a touch screen, it just tells you to see yourself at the bubbleizer. You go to your right on my right. Go closer, go closer. A brought the secret formula here over from SunTrust Bank in December 2011 and honor of our 125th anniversary. It was in the SunTrust Bank for 86 years. ये वो बॉल है जहाँ पे इसका सीक्रेट फार्मूला है कोका-कोला का। You can't go inside. अंदर गया तो दिखाया था ये फार्मूला। ओह ये फिंगर हैंड और ये रूम भी कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर लाइटिंग, ये जो फिंगर है यहाँ पर फिंगर देना जब ये खुलेगा ये पूरा लॉक किया हुआ है। तो Let me try. No possible. Who is that person? और इस रूम में पूरा डिटेल है कोका-कोला का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कोका-कोला कैसे एक्सपैंड हुआ, कैसे ये पूरा वर्ल्ड तक पहुंचा। और ये कोका-कोला का बॉटलिंग मशीन है, बॉटल को प्रेशर के साथ बंद करने के लिए ये मशीन यूज किया था इनिशियल डेज में जब कोका-कोला स्टार्ट हुआ था तब। और सामने वो फेस है जिन लोगों ने कोका-कोला को एडवर्टाइज किया था। और यहाँ पे जो है ये जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बेवरेजेज हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं सब अवेलेबल है। यहाँ पे हमें थम्स अप भी है, यू कैन सी द थम्स अप ओवर देयर। ये वर्ल्ड की सारी जितनी भी बॉटल्स आती हैं, कोला आता है, वो सारा यहाँ पे बॉटल्स होता है। एंड ये थम्स अप टेस्ट ठंडा। अच्छा कब आया बता रहे हैं। थम्स अप लेना। Here is our thumbs up. 1993 में आया thumbs up. You can see the thumbs up over here, which is 1993. So just a minute. So Coca-Cola, चिली Coca-Cola 1985 में आया था, thumbs up 1993 में, 1995 में। Now we are going to watch 3D movie. Stand clear! Power up! Let's look at this again.
everyone for joining our Parade of Happiness. To ensure social distancing, we ask that you please follow the footprint markers provided for you throughout the attraction. Please follow the polar bear line for pictures with Mr. Bear. सो नाउ वी आर गोइंग टू द सेंट डिस्कवरी। सामने जो रूम है एक्चुअली वो सेंट डिस्कवरी रूम है, जहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर कोका-कोला का अरोमाज है। यू कैन फील द अरोमा ऑफ कोका-कोला, यू कैन स्मेल एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच आई मीन फ्लेवर ऑफ कोका-कोला इट इज। White tail, it's not so slimy and gross as the other one, so feel free to use that. Feel free to begin wherever you like around the room. क्या बस हो गया इतना भी है। A friendly reminder that we made this exhibit during the height of COVID. तो ये जो तुम देख रहे हैं ये कोक का कैसे कोक का जो लोगो Invention. बॉटल्स कैसे चेंज हुआ, तो यहाँ पर दिखाया जैसे जैसे अभी एक 90 स्टैंड से पड़े जो कोक का बॉटल चल रहा है, जो कि हम लोग पीते हैं, हमें पता ही है। बॉटल में ये है, कैन में ये है, एंड टेम्परेचर 70 डिग्री पर रखा जाता है। अगर मैं बताता हूँ कैन कोक है, तो ये उसके पहले ये 1969 का था, जहाँ पे बॉटल का देख सकते हैं, कोक का बॉटल कैसा था, कैन कैसा था। अपने स्टोरी लिख सकते हैं ऐसे अपने। यहाँ पे ऑप्शन है, व्हेन फर्स्ट टाइम आई हैड अ कोक, ड्रिंकिंग ए कोक रिमाइंड मी ऑफ, आई लाइक टू शेयर कोक विथ, राइट योर ओन कोक स्टोरी। जब आप अपना स्टोरी लिख सकते हैं, और यहाँ पूरा स्टोरी बोर्ड है, इसमें लोगों ने लिखा हुआ है। My best cook memory was when my family. और हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करने कोका-कोला का डिफरेंट फ्लेवर्स को, और ऑल ओवर में जितने भी ड्रिंक्स हैं उनका फ्लेवर्स को टेस्ट करने जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे हर एक कंसोल पे मशीन लगी हुई है, जहाँ पे डिफरेंट कोक की फ्लेवर्स है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलती है। जापान का फ्लेवर है यहाँ पे, और भी डिफरेंट दूसरे कंट्री का फ्लेवर है। यू कैन टेस्ट दोज फ्लेवर्स ओवर हियर। सो विद दिस हमने जो है वर्ल्ड ऑफ कोका-कोला के जितनी भी यहाँ पे एग्जीबिशंस थी, जितनी भी यहाँ पर रूम्स थे, हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। और अब हम जा रहे हैं ऐसे गिफ्ट शॉप में एक्चुअली मैग्नेट देखने के लिए, बिकॉज मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से एक मैग्नेट तो बाई करता हूँ फॉर मेमोरी। सो वी आर नाउ इन द गिफ्ट शॉप लुकिंग फॉर ए मैग्नेट। सो वर्ल्ड ऑफ कोका-कोला एक्चुअली एक म्यूजियम है जो कि अटलांटा जॉर्जिया में है, और ये पूरा वर्ल्ड ऑफ कोका-कोला के हिस्ट्री से रिलेटेड है। इट्स जस्ट शोकेस द हिस्ट्री ऑफ कोका-कोला। और इसका टिकट मैंने बुक किया था ऑनलाइन, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था $18 पर पर्सन। अभी हमने कोका-कोला का जो स्टोर है वो पूरा कवर कर लिया है, एंड हम एज यूजुअल स्टोर ज़रूर घूमते हैं और एक मैग्नेट लेते हैं। तो हमने लिया है ये, लुक एट दिस स्लोली, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉटल। आई थिंक दिस इज़ अनदर कंट्री बॉटल, एंड
also costs is this magnet which is 7.95 and this one is for 3.51. तो सामने था वर्ल्ड कोका कोला जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जॉर्जिया एक्वेरियम, जो कि वर्ल्ड कोका कोला के बिल्कुल सामने है। यू कैन सी जॉर्जिया एक्वेरियम ओवर देयर। सो आप आ रहे हैं, आप दोनों कवर कर सकते हैं, दोनों आसपास ही है। Yes, and Georgia Aquarium is the second largest. हाँ, जॉर्जिया एक्वेरियम थर्ड लार्जेस्ट एक्वेरियम। ओके, फर्स्ट सेकंड शायद और थर्ड, ये तीन है, दो चाइना में है और एक शायद सिंगापुर में। आई एम नॉट कंफर्म, Yes, right. बट या सो ये थर्ड लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड है। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड द जॉर्जिया एक्वेरियम। और अभी आप देखो कितनी ज़्यादा पूरी भीड़ बढ़ गई है। हम जब आए थे तो थोड़ा कम भीड़ था। अगर आप पॉसिबल हो तो थोड़ा मॉर्निंग आवर आओ तो आपको अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। सो एक्वेरियम का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूँगा, बिकॉज वीडियो के जो करंट वीडियो उसका लेंथ ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।